Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. Welcome to the second installment of क्या ट्रेंड है. I'm Tina. And I'm शुभांगी. एक नई फिल्म आई है चंडीगढ़ करे आशिकी, जिस पे बहुत ही ज़्यादा हल्ला मच गया है. इसमें वानी कपूर नज़र आ रही हैं रोल निभाते हुए एक ट्रांस कैरेक्टर का. तो ये रोल एक आदमी को निभाना चाहिए या एक औरत को या एक ट्रांस पर्सन को निभाना चाहिए, इस पे बहुत ज़्यादा बवाल मच गया है. तो ये आयुष्मान खुराना, जो कि बॉलीवुड के सेल्फ प्रोक्लेम्ड ब्लू आइड बॉय हैं ऑफ एवरी अदर ऑप्रेस्ड पर्सन इन इंडिया, उनकी इस फिल्म पे आज हम चर्चा करेंगे. जो शुरुआत खुराना साहब ने विकी डोनर से की थी अनकंफर्टेबल टॉपिक्स पे मूवी बनाने की, वो अब एक सक्सेस फॉर्मूला बन चुका है. But I don't understand the controversy, Tina. It's giving representation to trans characters who we don't particularly see in titular roles. तो जब अब trans character को main role दे दिया, तो उसके बाद भी रोना मच रहा है. So the point here is that कि हम टोकनिज्म से आगे नहीं बढ़ पाते. मतलब आई अंडरस्टैंड कि somebody like आयुष्मान प्लेइंग अ कैरेक्टर पहली मूवी में, या जब हम कोई शुरुआत करते हैं ऐसे टॉपिक्स पे, अनकंफर्टेबल टॉपिक्स पे बात करना, तब ठीक है. बट वी हैव टू मूव बियॉन्ड दैट ऑल्सो, राइट? लाइक अगर हम बस एक स्ट्रेट वुमेन को ही लेंगे टू प्ले अ ट्रांस कैरेक्टर, तो हम उस स्टार्टिंग पॉइंट से फिर आगे ही नहीं बढ़ पा रहे ना. But I genuinely feel that that's a little idealistic, Tina, because we want representation, we want diversity, but जब मिल जाती है तो then we have to cry marketing, tokenism, etc. etc. तो ideally a trans person should play a trans role. But dude, actors की तो ये job है कि they are supposed to get into the skin of characters who have completely different identities from them. Why do we want to stop that? I personally don't understand the controversy behind Eddie Redmayne playing the role of a trans woman in The Danish Girl, which also won him an Oscar. He just was a part of a powerful movie playing a powerful character. I don't think we can keep going back to the same logic कि एक्टर्स है, एक्टिंग कर रहे हैं, मूवीज है, ठीक है. क्योंकि यू नो बॉलीवुड इन पर्टिकुलर, इवन इन जनरल इन इंडिया जनरली, हम स्क्रीन पे स्ट्रीट लोगों को ही देखते हैं या शायद इवन देखना पसंद करते हैं, राइट? एंड इट्स नॉट अ हिडन फैक्ट कि दैट वी आर लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम प्रोवाइडिंग सेफ स्पेसेस इवन इन रियल टू पीपल हु डू नॉट आइडेंटिफाई एज स्ट्रेट. देखो, बॉलीवुड एक कास्टिस्ट सेक्सिस्ट इंडस्ट्री है, पर मेरी आदत है ग्लास हाफ फुल देखना. We might be light years away from the time when Indian film industry gave spaces to people coming from all caste, class, gender identities. It's a Punjabi, Brahmin, Baniya industry typically. But consider this. 10 years ago, the only trans representation on screen was Ritesh Deshmukh with all his shenanigans in like Apna Sapna Mani Mani and Masti and maybe even Grand Masti, जिसमें वो दुपट्टा पहनता था और feminine voice में बात करता था. वो क्या था? Now, I think that was offensive content. With Sacred Games, with that whisper ad based on the true story of a trans woman adopting a child, we now have mainstream trans characters who are much more than just their identity or a joke on screen or asking for bheek at a red light on screen. और चंडीगढ़ करे आशिकी में जो वानी कपूर जो रोल निभाएंगी, उसमें भी मुझे लग रहा है कि वो एक स्ट्रगल पोर्ट्रे करेंगी, एंड इट माइट नॉट प्ले टू द ट्रोप्स. द ट्रेलर माइट हैव बीन डिसअपॉइंटिंग, बट लेट्स सी व्हाट द मूवी ब्रिंग्स ऑन द टेबल. But would it be better if a trans person could just speak for herself? तुमने उस एड की बात करी, राइट? इन द एड द पर्सन हु इज टॉकिंग, यू नो, इन द एड इटसेल्फ आल्सो आइडेंटिफाइज एज ट्रांस इन रियल लाइफ, राइट? नाउ इन सेक्रेड गेम्स, कुबरा सैद इजंट, like in real she isn't, right? So I take your point कि you know representation जब चाहिए हमें, तो you know कहीं शुरुआत होती है, and problems भी तो आएंगी, you know, when somebody is portraying such a character. लेकिन जहां तक बात रही ट्रांस एक्टिंग की, यू कैन नॉट, इट्स नॉट अबाउट प्लेइंग, बट देखो बॉलीवुड ऐसी जगह है जो बहुत सारी नौकरियां जनरेट करती है, ये हमें पता है. इट्स अ बिग इंडस्ट्री जहां जॉब्स मिलती है लोगों को. तो
और हम सबको पता है कि एक स्पेस मिलना, कमाना, रिस्पेक्ट मिलने के लिए हमारे सोसाइटी में कितना इंपॉर्टेंट है, यू नो हाउ मच मनी मैटर्स. एंड somebody like Vani Kapoor is not going to face, let's say, the same kind of exclusion that a trans person who probably wants to act, let's say, will face. जब उनको you know वो अप्रोच करेंगी बॉलीवुड को या किसी इंडस्ट्री को कि you know I want to play this character. So landing a job in an industry like Bollywood generally भी difficult है. Imagine a trans person trying to get a job. और ऐसे circumstance में somebody like Vani Kapoor is being chosen to play the role of a trans character. I think that is where, you know, that is where the focus should be. Vani Kapoor is an actress. It is literally her job to feel the kind of things that she hasn't. And she never will. But yes, it would be ideal if a trans character plays a trans person but I think the ideal would really be if a trans person plays a man or a woman, whoever they identify as, and not necessarily a trans character. I think that would be a revolution in diversity in the real sense. And you can call me an optimist, an ignorant fool, whatever you may. But I think such stories are good and open more gateways for having more diverse and inclusive stories in the future. तो एक बात बताओ, we had a movie like Article 15 जो काफी प्रेज भी हुई थी. उसमें जो ब्राह्मण सेवियर कॉम्प्लेक्स एकदम उभर के बाहर आता है, क्या वो सही था? Of course not. तो यहाँ पे you know aren't straight people out and out telling stories about an oppressed community they know nothing about? Okay then. Okay, so was Deepa Mehta's fire monetizing on an oppressed community? Or do we negate all the literature that Munshi Premchand has written? क्या आज प्रेमचंद होते तो उनको जाके बोला जाता hey dude pass the mic. And that movie that came out, Sonam Kapoor's एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, written by Ghazal Dhaliwal, a trans woman. It's the story of a lesbian relationship. Is that okay? Now, does she understand what lesbians go through? Especially trans people and lesbians are at a crossroads most of the time, especially when it comes to intersectional feminism. So my point is, writers and actors, they are storytellers, and if they told stories of only the people they identify with, of only their sexuality, of only their communities, then ये जो diversity की बात है ये तो भूल जाओ. What we have to strive for is for a filmmaker or a storyteller to fight their prejudices while telling a story. And the way we critique their work adds to the literature. It adds to the discourse in general. I think we need to wake up to the fact that the world is not woke. And like if I'm just to comment on जो examples you know you just gave, see that's what I'm trying to say कि you know I understand having a starting point, you know कहीं से तो हम शुरुआत करेंगे, but I'm saying कि we should not just be like हाँ शुरुआत हमने कर दिया अब हो गया. You know, there has to be some movement beyond that, right? And you do know now that even Oscars now has a diversity rider, right? Like, meaning actors can demand that the cast or crew of a film has more representation, right? Now, ऐसा Bollywood में कभी नहीं होता है. And वो छोड़ो super like movies like Super 30, you know, good topic you're picking up, right? And Bala, again, you know, it's talking about like important topics. एक्स्ट्रा मेकअप ब्राउन डाल के आप फेयर स्किन्ड एक्टर्स को ब्राउन दिखाने की कोशिश करो इन अ कंट्री जहां ये बहुत ग्लेरिंग प्रॉब्लम है, जहां हमें फेयरनेस चाहिए, है ना? मे बी नॉट सो मच इन मेन, या इट इज लाइक ब्लैक फेस इन यूएस, यू नो व्हाट, यू नो द प्रॉब्लम देयर, वी टेक फेयर स्किन एक्टर्स विथ मेकअप to play such roles. So the problem goes much deeper. ऐसा तो नहीं है ना कि there are no dark skinned capable actors who cannot play these roles. Right. See, Bollywood's most powerful director, if I can say that, is still closeted. So Hollywood is a very mature industry to compare us to. यहाँ की politically averse industry सबसे पहले अपनी ब्राह्मण बनिया मोनोपोली से आगे बढ़े, फिर हम बाकी reforms की बात करेंगे. Since we're talking about representation, there's another film that Netflix just released. It's called Meenakshi Sundareshwar. ठीक है?
it tries really hard कि हमें थोड़ा सा तमिल aesthetic provide करे, but mostly it fails. You know why? It just falls into using available stereotypes and then hardly furthers the cause of not assigning every South Indian that this country has कि ये तो मद्रासी है, right? So yeah. देखो मुझे तो ट्रेलर देखकर ही उबासी आ गई, तो मैंने पिक्चर तो देखी नहीं, बट ये वही है कि इस बॉलीवुड का कि जो नॉर्थ इंडियन है, they will play every other person on the planet. Priyanka Chopra will play Mary Kom. Sanya Malhotra is now playing a Madurai chick. So, but even in this Punjabi industry, even when they're portraying Punjabis, if a Sardar comes on screen, पीछे से बजेगा बल्ले 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 बल्ले, ओए शावा. So, like, what do? This industry resorts to portraying characters in unoriginal, stereotyped ways. Punjabi family हमेशा loud होगी, यूपी वाले के मुंह में 24 घंटे गुटका रहेगा, वो थूकते रहेंगे इधर उधर. ये तो बॉलीवुड की अनओरिजिनलिटी है जो कि प्रेजुडिसेस को सिर्फ और सिर्फ बढ़ावा देने का काम करती है. देखो इन 2021 वी कांट जस्ट सिट एंड से कि देखो बॉलीवुड तो अनओरिजिनल है भैया. कोई चीज पहले से चली आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि यू कैन नॉट अनलर्न, राइट? एंड इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड. इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंडिया, राइट? एंड बैठ के रिसर्च तो हम कर ही सकते हैं ना. मतलब आप जब मूवी बना रहे हो, आप थोड़ा सा टाइम रिसर्च के लिए निकाल लो, राइट? मतलब why can't you get, like हम मीनाक्षी सुंदरेश्वर की बात करते हैं, why can't you get somebody from the South Indian film industry, which again is not just a monolith. Separation है वहाँ पे भी. You'll find enough good actors, Tamil actors maybe, who can play these roles much better than the people you've chosen, right? So I'm not giving them a free pass. I'm just saying कि this is just another symptom of Bollywood's lazy writers and another symptom of Hindi imposition on South India. जैसे उस पिक्चर में सब लोग हिंदी में बात कर रहे हैं, तो सारे साउथ इंडियंस एकदम फर्राटेदार हिंदी में बात किया करेंगे. I really don't know what to do with this. All I'm saying is कि we can get better. क्योंकि ना ये हाई टाइम आ चुका है. मतलब वही जो मैंने बोला ना, आप 2021 में आ चुके हो, आप वही एक्सक्यूज बार बार नहीं दे सकते हो कि हाँ हमने शुरुआत कर दी तो आगे भी तो भरेंगे ना, वही तो खड़े नहीं हो जाएंगे ना हम. एंड चाहे 377 का जजमेंट हो, चाहे हिंदी इम्पोजिशन हो, देयर आर रेजिस्टेंट मूवमेंट्स नाउ, है ना? लोग इस ऐसी चीजों पे रेजिस्टेंट मूवमेंट्स अब कर रहे हैं. सो देयर आर इनफ वॉइसेस जो दूसरी साइड से बोल रहे हैं कि नहीं, दिस इज नॉट इनफ, एंड देखेंगे कभी बाद में होगा, देखेंगे. ये वाला एटीट्यूड इज जस्ट रियली प्रॉब्लमेटिक आई थिंक, एंड ये अब एक्सेप्टेबल भी नहीं है, एंड एटलीस्ट नॉट इन द नेम ऑफ मेकिंग मनी. So on that note, we are sending imaginary get well soon cards to Bollywood. Lage raho Munna Bhai style. The both of us have a lot to talk about, but we're out of time, so we are going to wrap it up here. What do you think about misrepresentation in Bollywood? Do let us know in the comment section below, and do not forget to subscribe to The Print.